क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि was there any problem doing any exercise that you did? कोई चैलेंज किसी भी किस्म का आपको फेस हुआ हो, कंप्लीट हुई नहीं हुई, अगर हुई उसमें से भी कोई प्रॉब्लम आया हो? ये हमें एक दो थे। जी बताइए। हाँ, एक तो एक्सरसाइज 25 नहीं पेज 25 जी नंबर 14 Same, yeah. In the cup, yeah. yeah it was जी like for one person तो उधर लिखा हुआ have तो हमें समझ नहीं आई beside have अच्छा beside अच्छा अच्छा her अच्छा, अब इसमें देखें बिसाइड तो इन द है, राइट? जी, लेकिन का क्या है pronoun. और उसका क्या Pronoun. मतलब है? his She, you. यू है इसका मतलब, राइट? तो और हैव के साथ आप यू लगाएंगे, You have. You have. यू हैव, Yes. राइट? Yeah. You have to do this, right? You have. So this is part of a bigger sentence. Of course, it's a fragment, doesn't give you complete information. But यहाँ पे आपको सिर्फ pronoun translate करना था. It was, I think आपका mind चल रहा होगा इसम दूसरे को translate करने पे. तो you जी map the have to का, ठीक है, कि शायद का को translate किया हुआ है. Hey. Anything else? एक था पेज 23 पे जो 21 है अजान नुम मिनल्लाही इसमें करना क्या था इतफा ओके Enough or not. इदाफा और नॉट तो इसमें ये टू टू वर्ड सेपरेट कंसिडर होंगे हम इसको कौन से वाले मिनल्ला। two words? मिनल्ला करेंगे या 21. 21 को अच्छा, पहले तो 21 में मुदाफ कौन सा है आपके ख्याल में? पहले मुझे ये बताइए, अगर ये इदाफा है तो which one is the मुदाफ? लाइट एंड हमने तो नो. अजानुन को मुदाफ कंसिडर करके तो नो कर दिया Yeah. अजानुन मिनल ठीक, He आपने said no. ज़ानुन को देखा और आपने कहा कि ये नहीं हो सकता. जी, जी it was heavy. Heavy. जी, and that's correct. ये वाला पॉइंट तो ठीक है, अजानुन को देखा और नहीं हो सकता. फिर उसके अलावा आप लोगों ने क्या किया, जुनेदन भाभी? हमने मिनल्ला हमें मिनल्ला की समझ नहीं आ रही थी फिर क्या हम इसको करें कि हम इसको ठीक है, मिनल्लाही इज नॉट इदाफा, मिन इज नॉट इवन एन इसम, ठीक है, तो मिन इज अ हर्फ, सो दिस इज नॉट एन इदाफा. 21. और ये चार सेपरेट वर्ड्स हैं, व अजानुन मिन एंड अल्लाही, ये 4 सेपरेट वर्ड्स. तो ये फिर जो 25 है गैजा कुलूबीहिम तो गैजा को देखा तो नहीं कर सकते कुलूबीहिम अच्छा अभी रुक जाएं, गैसा को देखा तो क्यों नहीं कर सकते? कि वो नहीं नहीं Right. गैजा कुलूबहिम को हमने कुलूबहिम को वन वर्ड कंसिडर करके गैजा कुलूबहिम को हमने कहा कि यस ये इदाफा है. प्रोनाउन की वजह ठीक से है, अब आप इदाफा के स्टूडेंट्स हैं, आपने लास्ट क्लास में हिम पढ़ा हुआ है, राइट? व्हाट इज हिम? ये तो Pronoun. प्रोनाउन है Pronoun. प्रोनाउन है. अब कुलूब अटैच हो एक और वर्ड है, हाँ बिल्कुल. तो कैन वी कंसीडर इट वन वर्ड? नहीं नहीं ना, कंफ्यूजन 2 वर्ड्स है ना, हाँ कि 3 वर्ड्स हो गए ना इसमें टोटल पे. 3 वर्ड्स हो गए टोटल. अब कुलूबी हिम को आप इंडिपेंडेंटली देखें, इज इट फॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ फ्रैगमेंट दैट यू नो? Yeah. हाँ कुलूबहिम. Enough. इदाफा, देयर हार्ट्स, Yes. right? Yeah. But if you look at Ghaizu and Kulubi, is it forming some sort of fragment? No. Think again. गैजा गैजा दो इसम नहीं आ Yes. गए एक एडजेक्टिव है और एक हार्ट तो दो इसम हो गए ना नहीं, हम तो नहीं कह सकते कि ये एडजेक्टिव है कि नहीं है. How do we know? आप इस तरह देख रहे हैं as an Arabic student, you looked at Ghaiza, and you saw it light, Like. and you saw it without null, right? Yeah. It is light and it is no al. So it is your potential mudaf. Potential.
We still need to find a mudaf ilay. You move forward and you find kulubi, which is mudaf ilay, Okay. and in jar. So you found ghaisa kulubi as one mudaf ilay, one idafa, and kulubihim as another idafa. So it's a chain reaction. Kulubi is acting as a mudaf ilay to ghaisa, but it is acting as a mudaf to him. सही बिल्कुल हमने Understand? इस पे क्लूब हिम किया था सिर्फ ये गाइजा क्लूबी वाला मिस हो गया था हमसे हमने जी, गलत को इग्नोर that's fine. That's fine. अभी आप जो है ना स्किल नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आप स्किल डेवलप कर रहे हैं, ठीक है? आप अपना माइंडसेट बना रहे हैं हाउ टू लुक एट अरेबिक एंड थिंक. अभी वो माइंडसेट नहीं बना हुआ ना पूरी तरह से. वो एक अलग माइंडसेट होता है. आपको याद होगा अगर आप प्रोग्रामर रहे हैं जिंदगी में, एक बुक आती थी थिंकिंग इन जावा. तो वो जब स्पेसिफिकली एक लैंग्वेज में प्रोग्राम करते हैं तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट. इट्स द सेम स्टोरी हियर. So we have to think in Arabic before we can start to apply anything. तो अगर आपने इसको एज अ फुल वर्ड भी कंसीडर किया जुनेद एंड भाभी, तो उसको में आपको सिर्फ इतना सोचना है कि अगर ये फुल वर्ड है तो हाउ डू यू नो दिस इज जर, राइट? क्योंकि आपकी जो इसकी एंडिंग है सुकून पे है. So it can neither be ending sound nor ending combination. So how can we mark it as jar? We can only mark it as jar if we only consider him as a pronoun. Because हमें फिर पता है कि ये flexible नहीं होते. ठीक है? Any other? 53 we have marked it as yes. Waqamu salata. Is it okay? Right or wrong? 53. सलात Oops, कहाँ चला गया? नहीं, इसमें तो ता आ गया ना, ता तो जर नहीं है. It's nasab or अच्छा, हमने आप नहीं, लोगों ने मैंने क्या कर किया जुनेद इसमें? हमने हमने तो इसको नो कर नो दिया. किया. No, it's not an idafa. It's not okay. और कैसे फाउंड कि ये हमने कहा था कि नो पहला तो हाँ, लाइट ये है ऐसे और है कि आपने अगर इसको लेट्स से इस तरह देखा, I mean most likely way you might have seen it. You might have seen it as iqamuna as a heavy ism and you thought ke noon is missing, right? So it becomes light and it doesn't have an al. As a student you might be thinking like that, ठीक है? Then as-salata has to be jar in that case. And it is not. It is nasb, right? So it cannot be idafa because it doesn't fulfill the criteria. And in any case, now that we are here, akamu is not an ism. ये आप आगे recognize कर लेंगे जब आप fails पढ़ेंगे तो. ठीक है? अगर ये होता तो it has to be akamu salati as an idafa fragment. Any other? एक जो आपने वो दिया था सूरा, उसमें जी. हमें वो उनकी समझ फिर हमें याद नहीं रहा. वो अन्नाहुम वो हम प्रोनाउन करते हैं मुदाफ और मुदाफ इलैह. इन्ना और अन्ना आपने अभी नहीं किया. अच्छा, So you have not done that part. इसमें कोई खास जगह पे था वो जो आपको वो बॉदर कर ज्यादा रहा दफा आया हुआ है. ठीक है. सेकंड में जन्नतुन This one, सबिल. this one, ये for example. ये जी, बिल्कुल बिल्कुल जी. ठीक है. ऑफ कोर्स आपको प्रोनाउन ना बहुत सारी जगह नजर आएगा. हमने सिर्फ इदाफा के साथ उसको डिटेक्ट किया था. ठीक है. दिस इज नॉट इदाफा. ठीक है. बिलीव इट और नॉट, देयर इज अ प्रोनाउन हियर टू. There is a pronoun in this too. There is a pronoun in this too. There is a pronoun in this too. But you can't see them yet. जो आपको फिजिकली नजर आ रहे हैं वो आपको सिर्फ इदाफा कंस्ट्रक्ट में नजर नहीं आएंगे. दूसरे कंस्ट्रक्ट में भी नजर आएंगे जो अभी आपने नहीं किए हैं. ठीक है. आने वाली 3-4 क्लासेस में आप ये इन्नाहुम को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. और एक वर्ड है इसमें, ये जब शुरू हो रही है आया 4 व इज़ार अइतहुम तो जीबू का, ये वर्ड जो है जी. ये का क्योंकि हमें मीनिंग ही नहीं आता था,
तो ये प्रोनाउन है। The ka is the pronoun, correct. अच्छा ताजुब अब ये वाला, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये वाली वो चीज है जो आप कहेंगे, आप अगर इसको देखेंगे तो उजीबू, आप कहेंगे लाइट, नो, अल, इट्स अ मुदाफ, एंड का इज अ प्रोनाउन विच इज a mudaf Mudaf. ilayh. So from Yes. your perspective right now, this is a perfect idafa construct. ठीक है ना? And if you say that to me, I'm not going to blame you for that. But this is not an idafa construct. This is a fail word, and you will only detect it once you have done the fails. ठीक है? तो अभी आप उसको नहीं मैप कर पाएंगे. But yes, the ka is the pronoun. Correctly identified. और कुछ? We forgot to do this. Sorry. This कोई बात नहीं, surah, आप कर surah. लीजिएगा, कोई बात नहीं. ठीक है, if that's all, otherwise we can start. ठीक है, Yeah. let's inshallah begin. Pronouns पक्के हो चुके हैं, दोबारा से सिंक तो करवाने की जरूरत नहीं है मुझे. हाँ, हो गए पक्के, आगे बढ़े. Kind of. चले ठीक है, ओके फाइन. अच्छा जी, अभी तक आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा, मैं उसको एक क्विक समरी आपके सामने लिख देना चाहता हूँ ताकि आप सब ऑन द सेम पेज हो. So we started with the study of 3 types of words. ठीक है? In 3 types of words, we said we picked up ism. In ism, we studied 4 properties of ism. Within 4 properties of ism, we study status, number, gender, and type. ठीक है? Then we picked up the most comprehensive property, which is status. Status. Right? In status, we set forms of status, which is ending combination, ending sound, and the Muslim charts came here. ठीक है? Then we said how to tell status. Actually, combination of both forms of status was rafa nasab jar. How to tell is ending sound and ending combination. Then we said light versus heavy isms. And we studied the flexibility. Okay, that was status. Then we studied the number. In the number, we studied the Muslim charts. We reminded ourselves कि Muslim charts में भी आपको plural मिलते हैं. We studied the concept of broken plurals. ठीक है? Within the broken plurals, we had a human versus non-human. Non-human. And the way we define humans, we said it is either a human, angel, or jinn. That's the definition of human. Everything else is non-human. ठीक है? And we said there is another type of plural here, which is plural by meaning, in which I gave you 3 words. I gave you common, karnun, ठीक है, and nas. And we said these 3 types of words are always marked masculine and plural. ठीक है? That's what we did in number. Gender, we studied fake feminine. We said the words that are ending with alif and hamza, alif maksura, which are usually the 4th letter. They are feminine. We also said that proper names of places are feminine, and there's a full list with we did. We also did real feminine. Biological feminines are always feminine, the mother, the daughter, and so on, things like that. So we discussed the caveat that sometimes you have a ta marbuta. You have ta marbuta in the end, but it may come in the end of a masculine thing. For example, hamza too. That cannot be marked feminine. That is biological masculine, therefore it will be marked masculine. Or the word like Musa and Isa,
They're always marked feminine, although they have the alif maksura in the end. All of that we studied. Okay. Type. Um, Common and proper. जी बिल्कुल. If you ever teach Arabic with Microsoft Word, you'll realize my challenges. Okay, type. Now we said proper and common. Hmm. We said default is always common. Common. Okay. What was the default on status? Rafa, nasab or jar? Rafa. 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 What was the default on gender? Masculine. Masculine. Masculine is the default. Okay. Unless proven feminine. Type is default common unless proven proper. Status is default Rafa unless proven nasab or jar. Mhm. Okay. So that's what we said. We took a look at the list of I think 5-7 points. One of them was that it starts with an al. It can be a proper name. It can be a pointer. It is some mawsuls which we do not know much about yet, and so on. So all of that study we did here. And up to this point, you were questioning your life. ठीक है? कि यार कहाँ फंस गए हम आके. And then we started the study of idafa. Idafa falls into the study of fragments. If you are looking for an Arabic term, they are called murakkab, murakkabat, okay? Phrase or fragments. Okay? They are not full sentences, they are just part of a sentence. Okay? So they don't give you full information, they give you part of the information. So we did idafa, two types of idafa, ism to ism idafa, and we did ism to pronoun idafa, Oh. and then third type was Special. ism to special mudaf idafa. ठीक है? And of course, in this same drill, we did lots about pronouns. Pronouns attached and independent. ठीक है? On the way, we have applied things to the surahs and some exercises. ठीक है? So that's where we are. Everyone with me on the same page on this. Is it a good reminder what we did? ठीक है? Overall Yes. summary जहाँ पे अभी हम fragment world में exist करते हैं, and slowly we are moving in fragment world. We have to do 5 fragments at least at this point. ठीक है? 5. One of them we have done it, idafa. So today we are going to start the second one. The second fragment is about noun and adjective relationship. So you have a car, but with an adjective, you could say it's a blue car. Right? So the blue defines the car. So blue is an adjective. You have a boy and you have a tall boy. Tall is an adjective, right? So this type of relationship we want to do now. How it is constructed in Arabic and how does it apply in the Quran, inshallah. ठीक है? English में बहुत use होता है, आपको पता है. There are certain principles about this. So usually you have one noun, but you can have many adjectives. How about I say blue, fast, cool, amazing, long, and shiny car. ठीक है? It is perfectly grammatically constructed phrase, but it's not a sentence. So you have one noun described by number of adjectives. Okay? So you can have multiple adjectives, but you can have only one noun. In Arabic language, the noun that is described
is called Mowsuf. Okay, so this car is a Mowsuf. The adjectives that are describing the noun are called सिफास. आपने उर्दू में भी हम सिफा का लफ्ज यूज करते हैं, आपने सुना होगा. ठीक है, सिफा. तो मौसूफ एंड सिफा relationship in Arabic is a noun and adjective relationship in English. ठीक है, that's what we want to study today. It's easy. एंड ये वो फ्रेगमेंट है जिसके बाद आप कहेंगे अच्छा इसलिए पढ़ी थी 4 प्रॉपर्टीज. ये वो वाला फ्रेगमेंट है. ठीक है, उससे पहले तक इंसान अपनी लाइफ को क्वेश्चन ही कर रहा होता है. ठीक है, तो अब इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं. अब जैसे हमने ऊपर इतने ये एग्जांपल्स लिखे. नाउ टेल मी, एडजेक्टिव इज कमिंग बिफोर और नाउन इज कमिंग बिफोर इन इंग्लिश? Adjective. एडजेक्टिव इज कमिंग बिफोर, राइट? अरेबिक में फ्लिप हो जाता है. अरेबिक में नाउन कम्स बिफोर and adjective comes after. Okay, so as an English speaker, you all not just have to think in Arabic, you have to detect in Arabic too, right? So when you're looking at it, you have to detect it in Arabic. So you will have Mawsuf first, then followed by the Sifah. In English, you have Sifah first, followed by Mawsuf. That's English. Okay, and this is Arabic. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई confusion? Now this fragment is not a difficult fragment. It's easy. Okay, but it requires your skills of identifying the 4 properties of an ism. Okay, that's what it is needed here. Okay. Let's start with the one. So Mawsuf. मैं कुछ characteristics इसकी दे देता हूँ. What was Mawsuf? Mawsuf was something that was defined. That was a noun, or was it an adjective? No. Noun. Now this is the word which is going to come before first, okay, in Arabic language. So there's few things you need to remember. So it is going to come first, and it is going to be one only. Okay, and it is always going to be an ism. This fragment is between isms. There is no play of fails or harfs. Okay, now when I say it's ism, everything applies. It can be a flexible ism, non-flexible ism. It can be a masculine, feminine, any status, right? But there are few things. Usually it isn't. For example, a Mawsuf doesn't make sense if it is a pronoun. We don't say tall he. You don't say that, right? It doesn't make sense. So it also cannot be a pointer, or tall, or beautiful that. You don't speak like that. This, that, those, these things cannot be Mawsufs. It also cannot be ism Mawsufs, which is a curiosity of what these people are, ism Mawsufs, and we have no clue. But yeah, be patient with them. Okay, these 2-3 things it cannot be, right? So you will never find in English or in Arabic an adjective defining a pronoun or a pointer. Okay, or even ism Mawsufs. Ism Mawsufs are words like the one, the one who, and so on. Quran में होते हैं ये al-lazi, al-lazina, these types of words. Right. So now Mawsuf cannot be this. Now let's talk about Sifah. Sifah
is of course second, okay? And it can be many. It's just like we said, okay? And when we say it's second, it means it's always after the Mawsuf, okay? It's never going to come before the Mawsuf, okay? Now the aspect of distance between these two words, the Mawsuf and the Sifah, if you go back to your Idafa world, were you requiring a mudaf ilayh right after, or were you tolerating other words that could come between them? Right after. Right after. In Idafa, nothing can come in between them, right? But in Mawsuf Sifa, you can have other words between them. Okay? Sometimes you have a Mawsuf, you have 2-3 words in the middle, and then you have the Sifa. Okay? So in that case, you will have, excuse me. Okay. Anytime I'm going to sneeze, so be prepared. So you may have 2-3 words between them, and then you still have to identify the Mawsuf and Sifa relationship. Okay, so they do tolerate long distance relationship. Out of the 5 fragments that we will do, 2 I believe tolerate long distance relationship. This is one of them. Okay. Yeah. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. I'll try to construct it in English. It's not very simple, but let me do that. For example, the praise is for Allah today and tomorrow. The master of the world. ठीक है? Let's try to understand this. Of course, in English there are multiple words. I'm trying to help you understand this long distance concept. So we're saying the praise is for Allah. Now, what is the noun? The word Allah. ठीक है? Can today be the description of Allah? The word Allah? No. 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 Tomorrow? No. No. The master of the worlds? Yes. Yeah. Yeah. It is a sifa of Allah, right? But it can come after some time. Right? There can be words in the middle. In Arabic construct as well, you will find this type of model. ठीक है? तो जब आप मौसूफ सिफा को डिटेक्ट कर रहे हैं, you don't always expect a sifa right after. You may expect a sifa sometimes after a while. लेकिन ऐसा नहीं है कि आया नंबर 1 में आपका मौसूफ है तो सूरा के एंड पे जाके 36th आया में उसका मौसूफ वो आ रहा हो सिफा ऐसा नहीं होता. It's usually nearby. ठीक है? But it can have multiple words in the middle. Principles clear है? ठीक है? Arabic पे आ जाए. Now, how do I detect Mawsuf Sifa in Arabic language? एक principle है इनका, ठीक है? 4 properties must match. ठीक है? If you find an ism and then you find another ism and their 4 properties match, it is potentially a Mawsuf Sifa. Is it always a Mawsuf Sifa? No. There can be scenarios where they do match in 4 properties, but making them Mawsuf Sifa doesn't make contextual sense. ठीक है? तो ये हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज्यादा मैं क्लियर करूंगा because there's lots of theory I'm giving you and you have to imagine. And when we apply it, then we will know more. Yeah. Right now, to detect Mawsuf and Sifa, you will have a ism and then you have another ism describing it and they will match in 4 properties completely. Let me give you an example. मैं आपसे कहता हूं Muslimun Jamilun. Jamil means beautiful.
ठीक है? Now let's do the 4 properties of the word Muslimun. Rafa, singular, masculine, common, Common. right? Jamilun, Rafa, singular, masculine, common. Common. 4 properties match. So this would mean beautiful. Oops, not this. Okay. Beautiful Muslim. अब आप इसको एनालाइज कीजिए. Muslim in English comes after, in Arabic comes before. ठीक है? Beautiful comes before, in Arabic comes after. 4 properties match. That is your Mowsuf Sifah relationship. ठीक है? And that's it. That's what you need to know in Mowsuf Sifah relationship. And after that it's all about applying. मैं आपको आपकी नोट्स पे लेके जाता हूँ. यहाँ पे हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसकी जो लिखी हुई है ऑलरेडी. Not this one. So Mowsuf, it's only one. ठीक है? Sifah, it has same 4 properties as the Mowsuf. They must match in 4 properties. It is always after Mowsuf. They can be more than one. They can tolerate the long distance relationship. ठीक है? Mowsuf is never pronoun, pointer word, or an ism Mowsuf. They can't. Sifah is never a proper name. It also makes sense. I mean, you can't say that the car is like whatever, Fahad. What a Fahad car. It doesn't make sense. You can't use proper names to describe an ism. And same with pronouns, same with pointer words. ठीक है? ये point important है to look for human and non-human broken plurals, because when you are doing the properties, broken plurals can get you to wrong property detection if you do not know what the meaning is. ठीक है? For example, यहाँ पे इन्होंने example दिए. Al-kutubu as-saghiratu. Now we all know kutubu means books. Now imagine you didn't know it means books. You didn't know what it means. Then you would potentially see it as just like a normal singular ism and you would mark it masculine. ठीक है? Like Muslimun, al-Muslimu. But in this case, you have Rafa, you have singular. Because it's a non-human, you're going to mark it feminine. Right? And you're going to mark it proper because of al. Right? So it's Rafa, singular, feminine, proper. Then you come to as-saghiratu. It's Rafa, it's singular, it's feminine, it's proper. ठीक है? Feminine because of the ta marbuta. Now, if you did not know this was a broken plural, you may not be marking it as feminine. You might be marking it as masculine and ultimately mismatching the properties. Right? But this is a Mowsuf Sifah. So small books. Okay? Haqaibu jamilatun. Now, haqaibu also means bags. So when it comes to non-human, it's important that you mark it correctly in terms of their properties. And for broken plurals, you do need the meanings. ठीक है? ये कुछ हम examples देख लेते हैं. Qawlan saqilan. Now all of these words are coming from the Quran. ठीक है? Now qawlan, let's do the 4 properties of the word qawlan. So beautiful books and beautiful bags. Beautiful books and bags. So 4 properties of qawlan. Status. नहीं पर अगर beautiful, sorry. बाद में एक question जी आपस में बहस शुरू कर दी थी. जी इसमें आपने कहा कि जो मौसूफ है वो सिर्फ एक हो सकता है. जी ठीक है, सेंटेंस में. अगर मेरे पास सेंटेंस है जी ब्यूटीफुल बैग्स एंड बुक्स. जी नहीं सेंटेंस में नहीं, एक फ्रैगमेंट के अंदर. अच्छा, फ्रैगमेंट में. सही फ्रैगमेंट इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल मौसूफ सिफा. दैट्स फाइन.
ठीक ठीक हम नंबर जी को नहीं ले रहे, कुतुब मैनी बुक्स नहीं, लाइक हम ऐसे ले रहे हैं कि वन नाउन है इसमें, हाँ कुतुब क्यों ऐसे ले रहे हैं? बिकॉज इट्स अ ब्रोकन प्लूरल एंड इफ यू रिमेंबर ब्रोकन प्लूरल व्हेन नॉन ह्यूमन इज मार्क्ड सिंगुलर फेमिनिन, हाँ Yeah. ठीक याद आया? अच्छा होना नाउन वन ही चाहिए, नाम तो नहीं होना नहीं, मौसूफ देखिए वन ही चाहिए। तो अच्छा जी मौसूफ वन होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी सिंगुलर पेयर प्लूरल कुछ भी हो सकती है, correct. but number of nouns for as mawsuf is always one in one fragment. Fragment. ठीक Clear है? जी थोड़ा सा और explain कर दूं इधर, just so we clear. So you can have mawsuf sifa number 1, then you have words between them, then you have mawsuf sifa number 2, then you have another set of words between them, then you have mawsuf sifa number 3, then you have another set of words between. And now this could potentially be your full sentence. ठीक है? You can have multiple mawsuf sifa fragments in one sentence, but within one mawsuf sifa you can only have one mawsuf, and that one mawsuf can be singular, can be pair, can be plural, can be broken plural, flexible, non-flexible, whatever. ठीक है? Clear? Okay. Now we were trying to see if these fragments are mawsuf sifas or not. So qawlan saqilan. Now qawlan, 4 properties of qawlan we should know. Nasab, and then Yeah. number, singular singular, Singular, gender, masculine, masculine, common. 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 Correct. Now, if you do the 4 properties of saqilan, is it nasab? nasab Yeah, Yes. Nasab, Is it common. singular? yeah. Yes. Masculine? Masculine, yes. yes Yes. Common? Yes. Yes. They match. Mawsuf sifa. Heavy word. Qawlan is word and saqilan is heavy. Sifah. Okay. Tammatul kubra. This is interesting as well. So let's do a tammatu. 4 properties. दोनों में had Rafa, same Rafa, singular, singular, feminine, feminine, proper. proper. Great. What about al kubra? Cobra is, I know Status it's, पता है हमें? नहीं no, चले नंबर पे आ जाए. number is singular, Singular. Gender, feminine, fake feminine, fake feminine. Very good. And type, proper. proper. So Proper. क्या रह गया? सिर्फ status रह गया. proper Right. अब एक sentence को याद रखना है आपने. concept If it could be, then it is. ठीक है? If it could be, then it is. अब आपने बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी because al-kubra is a word, it is never going to give you its status. You have to deduce that status by looking at the words around it. ठीक है? जैसे आप इदाफा के अंदर मुदाफ को देख के कह सकते थे al-kubra could be a मुदाफ इले, right? And jar. Just like that, in Mawsuf Sifa fragment, everything about this phrase is dictating, shouting and screaming that it has to be Mawsuf Sifa because it is matching in almost 3 properties, right? So what's the reason of not matching in the 4th? Because it's a non-flexible, you deduce based on that, this is Rafa. Okay, that's how you find the status. So if it could be, it is. Mawsuf Sifa fragment के अंदर इस phrase की आपको जरूरत पड़ेगी, अच्छी खासी पड़ेगी. ठीक है? तो you'll have to build that mindset. ठीक है? अच्छा जी. Suhufun mutahharatun. Let's do the 4 properties of the word suhufun.
Nasab, Purified. Nasab, singular, singular, Singular. Masculine. masculine, Masculine, common. masculine, common. common. ठीक हो गया. Sohfun is singular. Is it not broken plural? Sohf का. मैं यही तो फसाद डालना चाह रहा हूँ क्लास के अंदर भी. ठीक है, मैं It's चाह a रहा हूँ कि ये broken वाली जो plural. डिबेट है ना ये इग्नाइट हो जाए किसी तरह से. अब It's यहाँ a पे एक plural. ऑप्शन सिंगुलर आया है, फिर दूसरा मैस्कुलिन आ गया. ठीक है, लेट्स फाइट फॉर इट. व्हाट इज इट? It's a broken plural. And व्हाट it व्हाट could be मेक्स यू singular. बिलीव दैट? Can be few. It's कैसे Sohf पता is चला? the Sohf is singular, and that's Sohfun. इसका singular क्यों है? So, यानी Sohf. why do we think it's a broken plural? Answer is right in front of you. It's nowhere else. It's on the screen. scriptures. Scriptures. Yeah. Scriptures. If you only look at suhufan, it is absolutely perfectly singular rasab ism. That's how it looks like. Right? Yeah. Musliman. Unless you look at scriptures, which tells you the meaning. So broken plural looks like a singular but means plural. Plural. Right? Now you know the definition. Scriptures. And now you know it's a non-human, broken plural. Yeah. So what would it be? Singular feminine. Singular and feminine. Very good. So it's not going to be masculine, it's going to be feminine. Okay? So you have established the sohfun is singular, feminine, and common. Now let's do mutahharatan. Yeah, that's match. Now it matches. It nasab, it's singular, feminine, common, done. Okay? Mowsuf and Sifah. तो यही एग्जाम्पल जो यहाँ पे इन्होंने कैवियट आपके सामने अल कुतुब व सगीरा तुम्हें आइडेंटिफाई किया था, दैट्स व्हाट वी सॉ हियर. ठीक है. चलो जी. बलाउन मिर रब्बिकुम अजीमुन. सही है. So let's do the balaun first. Rafa, 4 properties. Rafa, singular, masculine, Bala, Rafa. common, Rafa, singular, Bala. I would singular, go singular. masculine, Feminine. masculine, Common. common. ठीक हो गया. अच्छा, अब हमें ये तो मिल गया बलाउन एक वर्ड इसम. सिफा किधर है इसकी? Azim. अजीमुन. Azim. Good. Very good. So if you look at azimun, you would find Rafa, singular, masculine, common. Now this is a long distance relationship example. जब आप ट्रांसलेट करते हैं इसको, so अब जब आप देखें great test, that's actually meaning balaun azimun. In English, you don't word by word literally translate. You translate how it makes sense in English. ठीक है. तो इसलिए आप जब भी ट्रांसलेट करते हैं आप यूजुअली मौसूफ सिफा को एज अ होल इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जबकि अरबिक में इट मे हैव बीन रिटन डिफरेंटली. वर्ड बाय वर्ड इट वुड मीन लाइक अ ग्रेट फ्रॉम योर लॉर्ड टेस्ट. दैट्स द लिटरल ट्रांसलेशन, बट इट्स बैड इंग्लिश. अ ग्रेट टेस्ट फ्रॉम योर लॉर्ड is a more sensible translation. ठीक है. But this is an example sorry, जी. one question. बलाउन में हमने हमजा को फेक फेमिनिन क्यों नहीं किया? हमजा को फेक फेमिनिन क्यों नहीं किया? अच्छा, अब वो देख रही हैं आप. हमने कहा था अलिफ एंड हमजा. ठीक है. अलिफ एंड हमजा if it is a fourth letter. Yeah. Yeah. So अब आप अलिफ और हमजा को सिर्फ उठा के देखें. Oh, sorry. तो you have ba and lam before it. That's it. Yeah. ठीक है. ठीक ठीक हो गया. जी. अब
what is going on with Rabbikum? What type of fragment is Rabbikum? Idafa. 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 Yeah. Idafa. ठीक है? Now you see an example of how things are coming together, right? So Idafa and Mowsuf Sifah coming together to give you this entire sentence. Your Lord is Lord of yours, Rabbi basically. Mhm. ठीक है? pronoun. ठीक हो गया. Sururum marfu'atun. 4 properties. Rafa. Rafa. Rafa, Plural. Singular. Masculine. singular, नहीं Oh plural. no. ऐसे Sorry, no. depends. Plural. पढ़ लिया. Wrong. क्या है? Plural. Singular. Feminine. Singular It's feminine. अच्छा, non-human. Non-human. हाँ So singular broken feminine. plural. ठीक हो गया. And And common. common. ठीक है, सही हो गया. ठीक हो गया. नॉन ह्यूमंस ने बड़ी जिंदगी खराब की हुई है ना, पता नहीं कहाँ से एलियंस आ गए. अच्छा जी, ठीक हो गया. अब इसको देख लेते हैं. मरफूअतन, रफा, सिंगुलर, फेमिनिन, कॉमन. या मौसूफ सिफा अगेन विद ब्रोकन प्लूरल. अच्छा, कास्फिम माकूल. ठीक है, कास्फिम माकूलिन. इसको देख लेते हैं. asfin and Jar. ma'kulin. ठीक है, so this is jar, Singular. singular, ये masculine. masculine, Masculine. Woman. Common. common, and ma'kulin, jar, singular, masculine, common. ठीक है. जब 4 प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए आप अपनी जिंदगी को क्वेश्चन कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे कि ये कर सके आगे आके. ठीक है, उस वक्त कुछ नहीं समझ आता, बाद में समझ आता है. ठीक है, लेकिन आप देखें इस उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, जस्ट टू बी एबल टू फाइंड द 4 प्रॉपर्टीज. Otherwise we can't detect these fragments, right? Very crucial part. Al-fawzu al-kabiru. Proper. ठीक है. इस जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, मैं सब भूल जाता हूँ, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है, तो मुझे स्टूडेंट्स को बताना पड़ता है. ठीक है, आई फॉरगेट ऑल ऑफ अ सडन. ठीक है, तो क्या होगा ये भाई? Rafa. Rafa. रफा, Singular. सिंगुलर, Masculine. masculine, Proper. एंड प्रॉपर. परफेक्ट. ठीक है. नारुन हामियतुन. नारुन को करना है हमने. Rafa. Singular. रफा, Nar is the Singular. last fact. Singular Singular feminine. as the Arab said. because the Yeah. Arab said so. Very good. And common. And now you know why hamiyatun is written in feminine. It could have been hamiyun, but it is written hamiyatun by attaching it a hijab, the ta marbuta, to make it feminine, because it has to match with nar. Okay? चलें ये कर लेते हैं. गुलामैनी, यतीमैनी. ये Maini plural. plural. Nasab or jar. So we have to identify which one it is. नहीं ये चलें, dual नस्ब है. और जार. Maini. Maini ठीक है. dual है. Dual है. ठीक है. Pair. हाँ, pair है. पेयर, Dual. Two. Masculine. जेंडर, मैस्कुलिन, टाइप, Common. कॉमन. ठीक हो गया. अब यतीमैनी को देखेंगे. नसब एंड जर, डुअल, मैस्कुलिन, कॉमन, मैच. Bill. ठीक. रहेगा. मगानिमु कसीरतुन. मगानिमु. तो ये broken plural है. How do we know it's a broken plural? Gains. कसीरतुन. Basically Gains. कसीरतुन जो है. नहीं gains. नहीं वो ठीक है, but कसीरतुन is a lot. नहीं पर वो उसकी प्रॉपर्टी अपनी है, नहीं. उस वर्ड की अपनी है ना.
वो ठीक है, बट मुझे तो उसी से मैं लिंक करूंगा ना, मगाने में No. मैं अफसाना करूंगा. No. If there is no abundant gain, then what would you do? I will It's not not do it. not Ikhtilaf in that's Amma it. I anymore. will not do It's it. Ikhtilaf in us. इसको हमने घरेलू क्लास बना लिया. The only way you should identify broken plural is by looking at the meaning. Hmm. ठीक है, that's the best way to identify broken plural. क्योंकि I mean the fact that they look like singular but they mean plural is the only giveaway about broken plural. Otherwise, अगर आप सिर्फ अरबिक, अगर मैं ये आपको हाइड कर दूं ये वाली डेफिनेशन, जो अगर आपको ये नहीं मीनिंग नजर आ रही हो, तो आप मगानिमों को मैस्कुलिन मार्क करेंगे इधर. ठीक है, बिल्कुल और आप बिल्कुल. उसको शायद हाँ, आप उसको मैस्कुलिन मार्क करेंगे ना. जी. और फिर आप कसीरा को फिर फेमिनिन करेंगे. फिर आप कसीरा को फेमिनिन करेंगे. फिर आप अगर यूं सोचेंगे कि इफ इट कुड बी इट इज, ठीक है, Yes. तो आप कहेंगे मैंने उसको शायद मगानिमों को मैं इसलिए फेमिनिन मार्क करूंगा क्योंकि कसीरतुन इज फेमिनिन. लेकिन I can ask the question, why don't you mark kasiratun masculine because maganimu is masculine? Why are you changing maganimu and not kasiratun? तो वो confusion जो है ना, किसको change करना है? That will exist, right? So इसलिए broken plural सिर्फ vocabulary से detect कर सकते हैं आप, या जब meaning दिया गया हो. ठीक है, so इस case के अंदर this is going to be rafa, singular, feminine and common. ठीक है. जी. So this is Mowsuf Sifah. ठीक है, आपको मैं कुरान एप्लीकेशन थोड़ी सी इसकी दिखा देता हूँ in last few minutes. I don't want to start a new topic. यहाँ पे यूज हुई है टर्म खुशबुम. खुशबुम मुसन्नदतुन. खुशबुम मुसन्नदतुन. अच्छा, खुशबुम means this Rafa. Broken plural. planks, basically planks of wood. That's what it means completely. But planks, this is what it means. खुशबुम. ठीक है, now let's do it. खुशबुम, 4 properties. Rafa. Rafa. Rafa, Singular feminine. singular feminine, Common. 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 Musannadatun means leaning, meaning leaning against the wall somewhere like this. ठीक है, मुसन्नदतुन, Rafa, singular, feminine, Feminine. common. खुशबुम मुसन्नदतुन, leaning planks of wood, leaning wood planks basically. That's what it means. यहाँ पे अल्लाह ताला जो कह रहे हैं बात, Allah Ta'ala is saying, وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ, when you see them, تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُم, their bodies impress you. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ, when they speak, you listen. لِقَوْلِهِمْ, their speech. كَأَنَّهُمْ, as if, خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ, they are leaning wood planks. This is an analogy that अगर कोई wood plank दीवार के साथ lean हुआ हो और strong wind चले तो क्या होगा? It will just drop, right? It will just fall. So Allah is giving a tashbih to their speech as if it's so hollow, it means nothing, that एक छोटी सी भी distraction उसको खत्म कर सकती है, the way they are speaking, right? It's an analogy in the Quran जो कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे दी है with the leaning planks of wood. ठीक है, so बहुत तरीकों से यूज होते हैं मौसूफ सिफा. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर I will teach you another fragment, very easy. And after that, once we have the set of 3 fragments, we will do a comprehensive application on the Quran only with these 3 fragments. ठीक है, और आप फिर देखेंगे कि ये कैसे इंटरप्रेट प्ले करते हैं इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, अभी मैं वो स्टार्ट नहीं करना चाह रहा, अदरवाइज इट विल स्टे इनकम्प्लीट एंड यू विल नॉट रियली गेट द पॉइंट. होमवर्क कैसे होमवर्क खत्म है. ठीक है.
क्या कह रही है? नो होमवर्क, इस दफा हमने एक्सरसाइज कर ली है। नहीं, होमवर्क इस दफा नहीं है, आप पिछला रिवाइज कर लीजिएगा और इस सूरा को दोबारा देख ओह लीजिएगा। वेरी छुट्टी। ठीक है, चले यार, कोई नहीं। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट ना हो जाएगा ना कहीं घुमा घुमा हो, then what will we वैसे do? मैं आपसे पूछना था, आई मीन आर यू अप फॉर कहूट टाइप एक्टिविटी इन द क्लास? कहूट बच्चे करते होंगे ना आपके, तो इट्स अ गुड टूल टू जस्ट टेस्ट फ्यू थिंग्स, प्रैक्टिस इन अ गेम एनवायरनमेंट। अगर आप चाहते हैं, so I can help bring the content from the previous classes to help you revise and in a more engaging activity if you I want that. think yeah, ये that would एक्टिविटी के तो हम हर वक्त तैयार रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल। चले, I'll try to bring something in the next class, कोई Kahoot छोटा मोटा 10-12 questions just to help you revise everything. oh, ठीक है, लेकिन ये मैं बता दूं, एक he's certain very point के good at बाद जाके, making life हाँ? difficult. क्या Fahad, चीज? he's very good at making life difficult. Me? Yes, मजा I am No, no, certainly. no, he. Oh, अच्छा, तो मैं भी वैसे हूँ भाभी। यूजली हस्बैंड्स का रोल होता है ऐसा, ठीक है, वी डिफाइन दैट, ठीक है। क्योंकि इसमें चले, हमारा कसूर नहीं है फादे, रोल ही ऐसा है। जॉब डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चले, इंशाल्लाह आई विल टेल यू इफ आई एम ब्रिंगिंग दैट इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट बी वरीड अबाउट इट, ठीक है। लेकिन एट सम पॉइंट इन टाइम जाके हम एक टेस्टी टाइप की एक्सरसाइज कंडक्ट जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि हम आई मीन वी कैन ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर। सही है, चले, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, Thank you. एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।